You have the entire Jammu and Kashmir, and you have only one railway line which is being built at the initiative of Atalji. And you have the entire Uttarakhand, you have Himachal Pradesh, you have Northeast. They are remote areas. They are totally cut off. And you can't expect the railways to spend money on these areas and develop railway lines on commercial consideration. Sir, my humble submission is that let this entire thing be bifurcated, let the present setup be run on commercial lines, and let these railway network in far-flung areas which have social concerns, strategic concerns, national concerns, they be connected, and their financing should be done through the general budget. Every year, the finance minister must make a separate allocation so that infrastructure can be developed in these far-flung areas, and these areas can also enjoy the fruits of development. उपसभापति जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि कम से कम अगली 2 पंचवर्षीय योजनाओं के में देश के दूर दराज के जितने हिस्से हैं उन सब को देश की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा। उपसभापति जी, अटल जी ने सड़क के मार्ग से देश को एक करने का सपना देखा था। आपको भी देश की जनता ने एक अवसर दिया है, उसका उपयोग कीजिए, बड़ा सपना देखिए, भारतीय रेल तंत्र को विश्व का सबसे बड़ा और सुरक्षित रेल तंत्र बनाने की योजना बनाइए। हम तो क्या, पूरा का पूरा देश आपके साथ होगा। उपसभापति जी, ये रेलवे की इतनी खराब हालत क्यों हुई? रेलवे में फैक्ट्रियों की घोषणा होती है, योजनाएं बनती हैं, नई नई रेलवे लाइनों की घोषणा होती है, पर इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि उनके वित्त पोषण कैसे होगा। और एक महिला रेल मंत्री थी, एनडीए के राज में भी थी, आपके राज में भी थी। जब उन्होंने एक बार बजट प्रस्तुत किया तो मेरे एक हिंदी के कवि मित्र ने 3 लाइनों की कविता कही, जिससे वो सारी की सारी मानसिकता जो थी वो समझ में आती है। भाया यदि मैं रेल मंत्री बन जाऊं, भाया यदि मैं रेल मंत्री बन जाऊं, तो दिल्ली से कलकत्ता की गाड़ी, दिल्ली से कलकत्ता की गाड़ी वह बंबई चलवाऊं। तो इस तरह की मानसिकता के चलते रेल का जो हालत हुई है वो हम सबके सामने है, और वर्तमान रेल मंत्री भी उस मानसिकता से बच नहीं सके। इसलिए कुछ लोगों ने कहा ये बजट तो बरेली का बजट है, क्योंकि 3 तो नई ट्रेन बरेली को आपने दे दी, इसी तरह से रायबरेली को दे दी, और इसी तरह से 67 ट्रेनें, 67 ट्रेन तो पहले से वहां चलती हैं, और जिन 22 नई रेलवे लाइनों की घोषणा हुई उसमें से रायबरेली का नाम भी शुमार है, और सरकार ने एक नई फॉल्ट व्हील फैक्ट्री भी रायबरेली के अंदर घोषणा की। उपसभापति जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं और 2 बातें कहना चाहता हूं। Sir, the railway minister had opened his speech with a poem, and I have very strong suspicion that he resorted to poetry to make up for the absence of substance in his speech. And sir, the railway minister's speech in fact fails to convey the message which Christine Weatherly's poem quoted by the minister gives. The poem says, and I quote, sir, I think I can, I think I can. But the minister's speech, though very high on promises, doesn't convey any facts, any reasoning, any planning which will give us a cause for optimism. His budget is basically a cut and paste job. He has culled out various promises which his predecessors have made, put them together and presented it as a budget speech. And you know, I am tempted to say in Hindi, मंत्री जी आपका ये जो बजट है, कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। Deputy Chairman sir, in the last 9 years, UPA 1 and 2 have been misleading the House as far as the health of the railways is concerned. This is not my charge, sir. For 5 years of Laluji's rule, it was claimed that this is a turnabout story in the world. Harvard, Wharton, such and such universities are calling. When Mrs. Mamata Banerjee became the railway minister, she brought out a white paper which proved
that all the claims which were made on the railways in the 5 years of UPA 1 rule, they, under Laluji, they were absolutely bogus. And now I am told, sir, that Minister of State for Railways, Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, is going to table a similar white paper which will expose the fraud played on the railways when the railways were outsourced to TMC. I hope he keeps his promise and we will get a correct appraisal of the railways under the UPA 1 and 2, and this is going to be in-house job. This is not what I was saying, which your own people who have been a minister and who is a minister are saying. And looking at the fate of the UPA 2, again I am reminded of a Urdu couplet. दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से. No translation. That is not being translated. Deputy Chairman, sir, neither people of India nor the member of this House are bothered about the party affiliations of any minister. For us, any minister, irrespective of his political color, is a minister belonging to the government headed by Prime Minister Dr. Manmohan Singh. There is also a concept of joint responsibility in a cabinet system. So the fraud committed by either Laluji or Mamtaji or her colleagues in TMC are frauds committed by the UPA. And for these frauds, sir, the ultimate responsibility lies with the UPA chairperson, Mrs. Sonia Gandhi, and Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Sir, I am concluding, and I will conclude. Please. I'm concluding. Balbirji, 1 second. I'm concluding in a minute, sir. No, you can continue, but I have to say a correction. So you cannot say like that on a member who is not a member of this House. So I just say, sir, that name is expunged. That name is expunged. Okay, sir. Srimati Sonia Gandhi is expunged. UPA chairperson, sir. Okay, sir, I am concluding. That is for that is for people of India to explain UPA, not for us. Okay, sir, I am concluding, and I am concluding with a poem by Shahriyar, that is a poet called Muhammad Khan, and I just want 2 minutes of your time, sir. तुम्हारे शहर में, शहर से we can understand railways, तुम्हारे शहर में कुछ हुआ नहीं क्या कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं क्या, तमाम दुनिया इस जगह रुकी क्यों है, यहाँ से आगे का कोई रास्ता नहीं है क्या, लहू लहान सभी कर रहे हैं सूरज को, सूरज से लीजिए रेलवे को, लहू लहान सभी कर रहे हैं सूरज को, किसी को खौफ यहाँ रात का नहीं है क्या. एंड लास्ट लाइन सर, मैं एक जमाने से हैरान हूं, मैं एक जमाने से हैरान हूं, मैं एक जमाने से हैरान हूं कि हाकिम शहर, मैं एक जमाने से हैरान हूं कि हाकिम शहर जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या, उसे देखता कोई नहीं है क्या. नमस्कार.